Whenever we talk about Afghanistan, two things come to in our mind. First is USA, second is Taliban. ऐसा क्यों? ऐसी क्या रब ने बना दी जोड़ी कि एक कंट्री के साथ दो कॉम्प्लीमेंट्री आपको फ्री मिल रहा है? तो यूएस, तालिबान, अफगानिस्तान, and what are the or which are the other countries that are involved in this particular peace process, and what ultimately will be the impact on India? So I am Anuj Sharma, and in today's lecture, in today's video, we will be discussing all these things. In the last video, we discussed about the relationship of India and Afghanistan, and I promised you that in the next video lecture we will be discussing about US Taliban peace deal. तो सबसे पहले इसके बारे में बात करने से पहले let us understand the background. So in 1990s there was a rise of Taliban in अफगानिस्तान में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी थर्ड फेज ऑफ कोल्ड वॉर में, जब देयर वाज अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर इन अफगानिस्तान. तो वहां से ही अफगानिस्तान में प्रॉब्लम जो थी वो स्टार्ट हो गई थी. तो 1990s में तालिबान का राइज हो गया अफगानिस्तान में, जिसके बाद अफगानिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गई और वहां पे वायलेंस एक तरह से देखने को मिली. वर्ल्ड में एक इवेंट ने सारी वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर दिया, वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज कर दिया. दैट वाज द 9/11 अटैक इन यूएसए, when the world trade centers collapsed. when the world trade center collapsed तो पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी चेंज हो गई. वो जज्बात बदल गए, अरमान बदल गए. तो उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद यूएसए वेज द ग्लोबल फाइट ऑन टेररिज्म अगेंस्ट टेररिज्म इन 2001. And one country that became the target of USA alongside the countries like Iran etc. was Afghanistan, because of the close connections of Taliban and Al-Qaeda. तो उसके बाद काफी सारे प्रेसिडेंट्स ने, बराक ओबामा ने भी कोशिश करी कि दे वांटेड दैट यूएसए शुड विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान, बट टू नो यूज. एंड अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप in 2017 brought the Trump policy or his own policy on Afghanistan, where he said that we want to withdraw our soldiers from Afghanistan. And the negotiations on the basis of that policy began in 2018, and the deal was signed in 2020 in Doha between USA and Taliban. So what was exactly that deal? So in that deal, the first feature of that particular deal was the US troops withdrawal from by 2021. USA decided that the troops will be withdrawn, 8,600 troops in 135 days will be withdrawn, and the NATO soldiers will also be brought down, and USA will withdraw all the troops within 14 months. Next thing was that Taliban will be cutting ties with Al-Qaeda. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों बना? क्योंकि तालिबान को कैटेगराइज करा गया दो चीजों में. उन्होंने बोला कि वन इज गुड तालिबान एंड सेकंड इज बैड तालिबान. ठीक है, एक गुड तालिबान, एक बैड तालिबान. कि गुड तालिबान के साथ हम टेबल पे बैठ के इंटरेक्शन करेंगे, गुड तालिबान से बातचीत होगी. बैड तालिबान एक वायलेंस प्रोपोगेट करता है. तो यूएसए ने बोला कि यार देखो, पीस चाहिए तुम्हें, पीस चाहिए हमें. वी ऑल आर रेडी टू टॉक अबाउट पीस, वी बोथ आर रेडी टू कोऑपरेट, बट वन थिंग यू हैव टू एश्योर दैट देयर विल बी नो यूज ऑफ वायलेंस इन द फ्यूचर, एंड फॉर दैट you have to cut the relationship with the Al-Qaeda, which is primarily propagating violence not just in Afghanistan but throughout the world. So one thing Taliban has to ensure was that cutting ties with Al-Qaeda. Next thing was that the prisoner release from both sides, that there will be certain prisoners that will be released from the side of USA and from the side of Taliban. So one thing that has to be ensured, and second last is end of violence and declaring ceasefire. Ki there will be no violent activities from both sides, and there will be a ceasefire that will be ensured. And another thing which was very, very significant was the removal of sanctions. Removal of sanctions, basically that United Nations had put sanctions on the Taliban leaders on the basis of them being declared as the terrorists. So they said that you remove the sanctions from our leaders so they are well accepted, and moreover there will be intra-Afghan dialogue for lasting peace. And this intra-Afghan dialogue will be the Afghan government, will be within Afghan government and Taliban. तो इस चीज के ऊपर बात की गई यूएस अफगानिस्तान पीस डील में. नाउ व्हाट आर द प्राइमरी चैलेंजेस? वन वेरी सिग्निफिकेंट चैलेंज इज बेसिकली अफगानिस्तान वर्सेस तालिबान. नाउ Afghanistan
in US Afghanistan peace deal or US Taliban peace deal, what was very ironical was that Afghan's government played a minimal role in this. Right? This is basically that USA and Taliban talked to each other and they came to a mutual conclusion. ठीक है कि जिन दोनों का आपस में रिश्ता है उनकी बात ही नहीं है, ठीक है कि लड़का अरेंज मैरिज की बात बाद में करेंगे। मतलब कि आप ये देखिए कि अफगानिस्तान और तालिबान में प्रॉब्लम है, ठीक है, उन दोनों को अफगानिस्तान को उसमें से निकाल दिया गया और यूएस से बीच में आ गया, ठीक है। तो यूएस से जब बीच में आ गया तो उन्होंने आपस में बात की और उन्होंने बोल दिया कि हमें रिश्ता मंजूर है, ठीक है। तो लोगों ने, लड़के ने बोला कि भैया मेरे से भी तो पूछ लो, लड़की ने बोला मेरे से तो पूछ लो, कह रहे नहीं 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 हमें रिश्ता मंजूर है, और रिश्ते से क्या हो गया, विवाह। तो अफगानिस्तान का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है जो अफगान गवर्नमेंट है, बेसिकली दे एग्री टू इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू दैट द पीस शुड बी अफगान लेड, Afghan owned and Afghan controlled. That we need to have Afghan led, Afghan owned and Afghan controlled peace. That is, our peace initiative should be led by the elected government of Afghanistan, not by some foreigners or some outsiders or the terrorist groups. So one challenge is this, that there is a inherent contradiction between the Afghanistan government and Taliban. Second is that Afghanistan government wants to end all forms of violence and ensure peace process, that there should be peace process that should be ensured. Next is exit of USA. Right, now exit of USA is difficult because exit of USA is difficult because the reason is that this entire peace process is led by USA and controlled by Taliban. So until and unless there is no surety of peace, USA cannot leave Afghanistan. क्योंकि अगर अभी peace establish नहीं हुआ और USA छोड़ के चला गया तो वहां पे दोबारा चांसेस हैं कि वायलेंस हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस चक्कर में क्या बोल दिया गया, दैट USA cannot leave Afghanistan in the middle, so because otherwise the violence may return to Afghanistan. नेक्स्ट इज रोल ऑफ पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान का रोल क्या है कि पाकिस्तान तालिबान को बैक करता है, ठीक है। अब इसकी वजह से देयर इज टेररिज्म प्रॉब्लम और टेररिज्म इशू एंड राइज ऑफ रेडिकलाइजेशन। तो अगर तालिबान की पावर आ गई और तालिबान की पावर इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब है पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो जाएगी। तो आप खुद सोचो कि अगर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इंक्रीज होगा और इफ द इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान इंक्रीजेस, दैट मींस इंडिया विल बी एट लॉस। सो it is not what is wanted. And second is ethnic complexities. Afghanistan में the politics or the understanding or the power distribution is on the basis of the different tribes, on the basis of different ethnicities. So there is one issue with regard to the ethnic complexities. And last is the new great game. New great game basically means the involvement of these countries and also India with regard to the situation of Afghanistan. We'll discuss this in the last slide where we'll talk about the initiatives or the requirements of these particular countries with regard to Afghanistan. Next is implications for India. When we talk about implications for India, peace and stability in Afghanistan basically will ensure development in the region and will also support India, because Afghanistan and India always historically have had very good ties. So India wants that there should be the Afghan led and Afghan controlled peace process. But if Taliban increases its power, Taliban's power get increased, it will be detrimental for India, because India has good relationship with Afghan government, not with Taliban, because India has never accepted Taliban and India has not also accepted to sit on the discussion table with Taliban to discuss peace process. India said that peace process should be led by Afghanistan's government, not by Taliban. तो एक ये बड़ा important situation बन सकती है इंडिया के लिए। दूसरी चीज क्या है, if there is peace and the peace process is led by Afghan government, तो India will basically check or it will reduce the strategic depth of Pakistan. क्योंकि अगर आप देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, लास्ट लेक्चर में बताया था, तो लैंड बाउंड्री अफगानिस्तान की यूज होती है, पाकिस्तान का लैंड यूज होता है। इंडिया ने अगर कहीं सेंट्रल एशिया में फोर्टे करना है या फोरे करना है तो एक ये प्रोसेस प्रॉब्लम आ सकती है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ का इशू आ सकता है।
उसके बाद इंडिया वांट्स इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू एनहांस, राइट. इंडिया हैज नॉट सपोर्टेड डायरेक्ट लिंक्स विद तालिबान, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, एंड दिस पॉइंट ऑलरेडी आई एक्सप्लेन्ड दैट direct Afghan led, Afghan owned and Afghan controlled peace process. And most importantly, if there is rise of power of Taliban, that means there can be rise of radicalization or terrorism which can directly impact the Kashmir situation as well, right. So this is problematic for India. Now when we talk about the new great game, so which are the major players that are involved? So first player that is involved is basically China. Now China is basically evolving towards more engagement in various areas including Afghanistan. क्योंकि सर होगा क्या कि यूएसए अगर बाहर जाता है तो जो स्पेस यूएसए खाली करेगा उसको फिल करने के लिए चाइना फटाफट भाग भाग के आ रहा है. तो जैसे ही यूएसए विड्रॉ करेगा तो किसी ने स्पेस भरी तो इट कैन बी चाइना एज वेल, राइट. चाइना की दूसरा इशू क्या है कि अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आती है, पीस आता है, तो देयर विल बी स्टेबिलिटी इन Xinjiang रीजन ऑफ चाइना, where there is the problem with regard to radicalization of Uyghur Muslims which China wants to control. So China wants that there should be peace and stability. Sorry. Next is access to Central Asia, right. ये तो वही कॉमन हो गया. Success of one belt one road policy which is very significant for China's interest, which is very significant for China's interests as a whole, right. Next is increase in Pakistan's influence. मतलब देखो ना, सीधी सी बात है यार कि पाकिस्तान का अगर इन्फ्लुएंस इंक्रीज होगा तो चाइना का इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा. दोनों अलायंस है, दोनों पार्टनर्स हैं, प्रेम है दोनों का, ठीक है. तो अगर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो गया तो चाइना का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो गया. And last is basically that China is investing highly, or high investments of China in Afghanistan, which will basically ensure peace and prosperity and better relationship between the two countries. Next is Russia. Russia basically चाहता है कि जो उसका खोया हुआ ताज है, खोई हुई इज्जत है, वो वापस मिले. पहले रशिया और यूएसए दो मेजर पावर्स होती थी, अब रशिया उतनी बड़ी पावर नहीं है, तो रशिया चाहता है कि कहीं ना कहीं उसकी धाक जम जाए, समवेयर रशिया गेट्स द पावर सो दैट रशिया कैन रीगेन इट्स global status. And Russia even started Moscow forward talks where Taliban also participated, and for the first time two non-officials from India were represented. They were the retired officials sent by India. India said that we are not participating officially, but we are sending two people who can participate from our side. And last was Iran. Iran basically is the largest trading partner of Afghanistan, and there is a huge control of Iran in the Islamic world. There are two primary leaders of Islamic world, Saudi Arabia, Iran, and now even Turkey is joining the race. So if Iran is with India, then there can be a situation that the control of Iran in Islamic world can be helpful for India. And last is, as Iran is facing sanctions from the world, so if there is peace and stability in Afghanistan, that can help Iran's crippling economy and stabilize Iran as well as stabilize Afghanistan. So I hope you understood today's lecture and of US-Afghanistan peace deal, which is very significant, very important from the mains perspective and its impact on India. I'll see you next week. Until then, thank you very much. All the best. Be safe and study hard.